department at Safe Express. Today, we got a wonderful topic to discuss upon, and the topic is problem solving and decision making skills and tools. So, what we are going to do is we are going to explore few ways how to solve a problem and how to make a better and effective decision, which is one of a very big challenge in our life. In day-to-day life, we come across number of problems. So one of the biggest challenge that we have is how to address those issues, challenges, problems, and how to make a decision which is covering all the aspects, which ensure that yes, every stakeholder is taken care of, and all the issues which are pertaining should be addressed to. So before I begin, I would like to share a kind of a situation, and I would appreciate if we all who are joining the session can go through it and probably correlate a bit, so that it would be more meaningful for all of us to see how it goes. So as I can see, good number of people have joined in. So I can see everyone like good morning from Harish to Deepak ji to Gaurav, Sumit, Shubham. I can see so many people have joined in. Amit, Harshal, Sachin, Pashwati, Lokik, Prasoon, Anand, Sandeep Jain, Himanshu, Satyam. So many people have joined in from different portals through Facebook and through YouTube and other channels. So I really welcome everyone. Today's topic is really an interesting one and something which we use very often, knowingly or unknowingly. So last time we discussed about the brainstorming skills. Today we are going to extend it to decision making and problem solving. Problem solving would obviously require brainstorming skills at one or the other point. So that is what exactly we discussed last time. And I would really appreciate if in case you want to go into length, you can go and uh, watch the last time, the video which was recorded last time. So I'm going to put a situation to you and just analyze it and see what exactly you answer. So let's say there is a group of children who are playing near two railway tracks. One which is still in use, the other one which is disused. So sometimes you might have seen in the railway track, few tracks are functional and few tracks get dysfunctional or disused owing to certain number of reasons what exactly may happen. So यहाँ पर क्या है, जो मैं एक आपको सिचुएशन बोल रहा हूँ वहां पे है कि कुछ ट्रैक्स हैं जो कि जहां पर गाड़ियां चलती हैं, ट्रेन्स आती हैं, और उसी के बगल में एक ट्रैक है जो कि डिसयूज है। एक ग्रुप है बच्चों का जो कि वहां पर खेल रहे हैं। तो उनमें से एक बच्चा जो है वो डिसयूज ट्रैक पर है और बाकी के सारे जो बच्चे हैं वो ऑपरेशनल ट्रैक पर हैं। अब आप जो है लेट्स से इंटरचेंज पॉइंट पर हैं और आप देखते हैं कि सामने से एक ट्रेन आ रही है। आप देख रहे हैं कि सामने से एक ट्रेन आ रही है, आप इंटरचेंज पॉइंट पे हैं और आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे उस ट्रैक पर हैं जो कि यूज्ड है, जिस पे जो फंक्शनल है, जिस पे ट्रेन आ रही है, और एक बगल का ट्रैक है जो कि डिसयूज्ड है और उस पर एक बच्चा खड़ा है जिस पे ट्रेन नहीं आती है। सो मेरा यहाँ पर आपसे प्रश्न होगा, क्या करेंगे आप उस सिचुएशन में? क्या करेंगे आप उस सिचुएशन में? Would you make the train change its course to disused track and save most of the kids? क्या करेंगे आप? ट्रेन को आप उस ट्रैक पर कहते हैं डाइवर्ट करेंगे जो कि सबसे मतलब डिसयूज्ड है, यूज नहीं करी जा रही है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को बचाएंगे, या फिर आप ट्रेन जैसे आ रही थी और उसी वाले रास्ते से जाने देंगे? है ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। हम में से बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि अगर ट्रेन को हम डाइवर्ट कर देते हैं और दूसरे ट्रैक से आती है जिसमें सिर्फ एक बच्चा है, तो सिर्फ एक बच्चे की ही शायद लाइफ को कुछ रिस्क होगा या मे बी लाइफ सेक्रीफाइस हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे बच जाएंगे।
चलिए मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए एक पॉज़ लेते हैं और फिर से सोचते हैं कि हम क्या डिसीज़न ले सकते हैं और क्या लेना चाहिए। बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है यहाँ पर कि हम जब यहाँ पर कोई भी डिसीज़न ले रहे हों, तो हम ये सोच सकते हैं कि हम उस ट्रेन को डाइवर्ट कर दें डिसयूज़ ट्रैक पर सो दैट ओनली वन चाइल्ड इज़ सैक्रिफाइस्ड बट मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द किड्स कुड बी सेव्ड। एंड अगर मैं कहूँ तो शायद आपने ऐसा सोचा होगा या नहीं वो आप जान रहे हैं, बट मैं जब मेरे को ऐसी प्रॉब्लम पोज़ करी गई थी तो शायद पहली दफ़ा में मैं भी कुछ ऐसे ही सोचने की शुरुआत कर रहा था, बीइंग मोर ऑन द रैशनल साइड एंड स्टिल मोर ऑन द मॉरली एंड इमोशनली साइड। क्योंकि कई बच्चों के कंपैरेटिवली एक बच्चे को सैक्रिफाइस करना शायद could have been better at that time. But when I gave it a thought, I realized it would be very wrong to do so because सबसे पहली चीज जिस एक बच्चे ने राइट डिसीजन लिया है उस ट्रैक पर खेल करके जिस पे ट्रेन नहीं आ रही है वो क्यों सफर करे मेरे किसी। एंड एक और भी बड़ी सी चीज है जिसको कई बार हम बहुत जल्दी में इग्नोर कर जाते हैं या शायद उस पर फोकस नहीं करते हैं, वो ये है कि उस पर्टिकुलर एक बच्चे के संग में जो होगा वो होगा, लेकिन अगर मैंने ट्रेन को ढाया है एक डिसयूज ट्रैक की तरफ तो हो सकता है बहुत सारे जो कि ट्रेन में हो उनकी लाइफ को भी मैं रिस्क पे रखता हूँ। ट्रैक डिसयूज्ड है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो इसलिए यूज नहीं किया जा रहा है क्योंकि नहीं है, शायद उसकी पटरियां उसका ट्रैक बेटर नहीं है, लोड लेने की कंडीशन में नहीं है, उसमें करंट फ्लो नहीं है, multiple reasons could be there, and that's why basically that track has been not in use for a long time. And when I do so, what basically I'm doing is in order to in my attempt to save few kids, I'm sacrificing good number of lives, which exactly should not be. So this is basically imagine situation which I pose in front of you so as to tell you as how we get diverted from here to there when seasons. When we come a problem and we have to take a decision, lot many times we are so emotional or so biased or we don't look in 360 angle of it. So I would appreciate whenever we have to make decision, we have to be very aware. We have to be aware on the 360-degree angle, as in like what all aspects this particular problem may pose and what all could be the consequences or impact solutions. So always remember one thing that what's right isn't always popular. What's popular isn't always right. So when you decision, please make sure that yes, sometimes your decisions may not be so popular, but the decision has to be right because that is what is expected from a person like you when you take decisions. So this is something which is very important when we take decisions. So I'll move further and talk about few of the things how exactly we need to take uh, decisions. So let's move further and talk about few other things. What exactly is problem solving? Problem solving, I would say, is the process of working through details of a problem to reach a solution. Problem solving may include mathematical or systematic operations and can be because of individual critical thinking is. Problem solving आखिरकार है क्या? ये एक प्रोसेस है जहां पर हम प्रॉब्लम के कई सारे एस्पेक्ट्स को करते हैं ध्यान में रख करके डिस्कस करें, एक्सप्लोर करते हैं और क्या बेस्ट सिचुएशन करी जा सकती है क्या बेस्ट सॉल्यूशन लिया जा सकता है उस सिचुएशन पे उसको ध्यान में रखते हुए हम एक डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर हमें कई सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होता है। एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि जब भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज लाइक द importance of problem solving. So when problem gets solved, with the managers or the executive there, they possess their proactiveness, their responsiveness and their management style reflect. जब भी कभी कोई इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो यहाँ पर जाता है कि
कैसी है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस कैसा है और उसकी मैनेजमेंट स्टाइल कैसी है। मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, there is no definite kind with all management style. So we have to opt for one or the other kind of problem solving model depending on the kind of situation. So when we go ahead and talk about this, so we need to understand that what exactly is something that exactly bothers most of us, and how we can go ahead and solve something or the other over here. So उसके पहले एक और भी चीज जाननी बहुत जरूरी होती है कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम उनके लिए, अपने सॉल्यूशंस के लिए कई तरीके से सोचते हैं। तो जनरली हमारी जो सोचने के तरीके होते हैं वो तीन होते हैं। जब हम बात करते हैं, so the three modes of thinking that we generally have is the lateral one, divergent one and the convergent thought. अगर हम बात करें कन्वर्जेंट की, तो हम एक प्रॉब्लम को स्पेसिफिक बनाते हैं और स्पेसिफिक बनाते हैं और छोटा करते हैं और उसके सॉल्यूशन बनाते हैं, सो दैट वी कैन रीच आउट टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन वी कैन सॉल्व इट। जब हम डाइवर्जेंट करते हैं तो हम एक प्रॉब्लम को सोचते हैं कि वो और कितने एस्पेक्ट से उस प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसके कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, फर्दर स्टेप्स और उसको एक्सप्लोर करते हैं और देन हम अलग अलग पैरामीटर्स को जाकर के उसको सॉल्व करते हैं। वहीं लेटरल थिंकिंग, जिसको कि बहुत ही ज्यादा हद तक क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं हम, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पर हम हमेशा प्रॉब्लम को एक अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक अलग अप्रोच के संग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये हमेशा आपको एक नए तरीके से सॉल्यूशन देने की कोशिश करती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एग्जैक्टली व्हेनेवर वी आर डूइंग इट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है बहुत ज्यादा लॉजिक यूज करेगी, आपकी वर्टिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल है और लीनियर थिंकिंग मोड पे आपको चलेगी, ठीक है। सो आपको ये ऑब्वियसली ध्यान रखना है कि उस वक्त आपको प्रॉब्लम को स्पेसिफिक ले जाकर के एक्सप्लोर करके उसको सॉल्व करना है या उस प्रॉब्लम के कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं उनको एक्सप्लोर करना है, और अगर ऐसा करना है तो फिर आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको इमेजिनेशन का बहुत यूज करना पड़ता है, जिसको कि हम बेसिकली क्रिएटिव या हॉरिजॉन्टल थिंकिंग बोलते हैं। बात आती है आपकी लेटरल थिंकिंग। सो ये क्रिएटिव थिंकिंग है जहां पर जनरली हम थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स की बात करते हैं, और यहाँ पर हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे दफे वी आर नॉट गोइंग थ्रू द डायरेक्ट अप्रोच बट वी आर गोइंग थ्रू एन इनडायरेक्ट एंड क्रिएटिव अप्रोच यूजिंग द रीजनिंग दैट इज नॉट इमीडिएटली obvious but involves ideas that may be obtainable by using only traditional step by step logic। और यहाँ पर जब हम इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम उसके कई सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अगर जब भी कभी हमें प्रॉब्लम होती है तो हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि उस प्रॉब्लम के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चला कि प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमें बहुत मदद करते हैं ताकि ये पता चल सके कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर है तो वो क्या प्रॉब्लम है। सो इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम प्रॉब्लम को बहुत ही इफेक्टिवली सॉल्व कर पाए। जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, देन द सेकंड स्टेप कम्स इज डिफाइन द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है, किसको है, कब से है, कहाँ है, क्यों है। इस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और हम एक्सप्लोर करते हैं कि प्रॉब्लम के क्या-क्या कॉजेज हो सकते हैं, उनको हम एक्सप्लोर करते हैं फर्दर स्टेप पे। जब प्रॉब्लम के कॉजेज एक्सप्लोर कर लिए गए हैं तब हम आते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोचेस ढूंढने के लिए। तो जब हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे होते हैं प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए, तो हमें ध्यान रखना होता है व्हाट एग्जैक्टली वी आर सपोज टू डू एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। इज दिस प्रॉब्लम सो बिग दैट इट नीड्स आवर अटेंशन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड देन एंड देयर ओनली। डू वी नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम as soon as possible, or we can push it or delay it or postpone it for some another time? Or if the problem is not at all a big one, it is not going to create a bigger impact, then we also sometimes decide we're not gonna solve this problem, we'll side away.
with this problem. So ये तीनों चीजें जो भी हम डिसाइड करते हैं उसके पहले हमें एक चीज ये ध्यान रखनी थी कि ये सारे स्टेप का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा, कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करने के बाद में हम ये डिसाइड करते हैं वेदर वी सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली, or we'll solve the problem but not immediately, after some times, or we'll solve the problem but because it is not of so much of importance, so we are not deciding when to solve it until it is either it becomes something tangible and important and considerable, or probably maybe in the meantime the problem may vanish away. So हमें ये देखना पड़ता है। अब जब हमने डिसाइड कर लिया है कि लेट्स हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। We start exploring the options. So when we explore the options, then पोस्ट टू दैट वी इवेल्युएट द ऑप्शंस। जो जो हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम उनके ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन कितना वैल्यूएबल है और किस तरीके से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये मदद करेगा, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे। जब हमने सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट कर लिया है तो उसमें से हम चूज करते हैं कि कौन सा हमें ऑप्शन एज अ सॉल्यूशन लेना है, कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। जब यहाँ पर हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने निकाले गए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को फाइनली डिसाइड करते हैं एज अ सॉल्यूशन, तो हमें एक ये भी चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप में हो रही है, जनरली कॉर्पोरेट में जब हम बात करते हैं तो हम ग्रुप में बात करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट नोट बनाना जरूरी है, सो दैट वी ऑल नो दैट यस वी ऑल एग्री टू दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज देयर कुड बी वन मोर प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस गड़बड़ रहते हैं या हमारे लिए कहते हैं बैकफायर करते हैं। सो एवरीवन विल हैव अ से, ये तो मैंने बोला ही नहीं था, आई वेंट सेड लाइक दिस, और देयर हैज बीन समथिंग एल्स और द अदर। So this is something which needs to be addressed. So there has to be a document of agreement. When we create or prepare the document of agreement, we are more and more logical to find the applicability of every aspect of the solution. Initially we may not be so much involved, हो सकता है हमने 80% 90% इन्वॉल्व होकर के बोल दिया कि यस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काम कर जाएगा, लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट एग्री करते बनाते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ एग्रीमेंट, सो वी आल्सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग वेदर दिस विल रियली वर्क और नॉट, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। सो हम वहां पर थोड़ा सा और सिंसियर हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। जब हम बात करते हैं तो हम एग्री करते हैं सारे के सारे किस्म के कॉन्टिजेंसीज या मॉनिटरिंग मोड पे। हाउ वुड वी monitor whatever we have applied, is it working or not, and if it is working, how much it is working, will is it making sense, it is making benefit or not. So this is something which really needs to be addressed. Now moving further, I would like to say प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा एक प्रोसेस जो है उस पे जैसे मैंने भी बात करी है, आपको बताया, यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम। सो व्हाट एग्जैक्टली वी डू व्हेन वी डिफाइन द प्रॉब्लम? सो when we define the problem, we differentiate the fact from the opinion. Lot many times we think that there is a problem, but actually there is no problem, or we think there is a hell lot of problem, but the problem is only finite and it's only something which is small which can be addressed, or sometimes which we may think the problem is very tiny, it is not going to impact, but when we do the fact check, we analyze problem बहुत बड़ी है, सीवियर है, और साथ में ये हमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकती है ऑन द नेगेटिव साइड। सो वी नीड टू नो वेदर प्रॉब्लम इज देयर और नॉट, एंड इफ इट इज हाउ मच इट इज। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट द फैक्ट फ्रॉम द ओपिनियंस। नाउ व्हेन वी हैव डन, देन वी हैव टू एक्सप्लोर what all could be the underlying causes to it. Then कंसल्ट ईच फैक्शन इन्वॉल्व फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ एक इंसान से नहीं मिल रही होगी, हमें कई सारे लोगों के थ्रू वो इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो वी हैव टू कंसल्ट विद ईच एंड एवरी पर्सन whosoever is sharing the information, so as to validate whether the information shared is really important and it is really authenticated or not. So उसको इंफॉर्मेशन को चेक करने के बाद में हम बात करते हैं, और हम फिर प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं, स्टेट करते हैं, जहां पर हम ये भी क्लियर करते हैं कि यस इफ इन केस द स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड थिंग इज वायलेटेड, तो क्या हुआ है, क्या चीज है जिसको हमने प्रोसेस पे फॉलो नहीं किया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और ये हम डिटरमाइन करते हैं कि इन विच प्रोसेस द प्रॉब्लम इज देयर। सो
जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि हम प्रॉब्लम को विदाउट डेटा सॉल्व नहीं करने वाले हैं. So we would obviously have the data before we go ahead and solve the problem. So move, what we do next is we identify the potential causes. So we want to take our main question and identify more specific questions. यहाँ पर हम ढूंढते हैं कि वो exactly जो problem है वो कहाँ है, क्यों है, कैसे है, कब से है, किसको किसको impact कर रही है. So these kinds of questions जो होते हैं जिनको हम granular questions बोलते हैं, we figure it out and we explore, and every question then is analyzed, after to which there is a mutual exclusive collective list is created, जो कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके सारे पोटेंशियल कॉजेस को एक्सप्लोर करने के लिए हेल्प करती है. सो व्हेन वी गो फर्दर, हम यहाँ पर प्रॉब्लम को अब डिफाइन कर चुके हैं और उसके कॉजेस को ढूंढ चुके हैं. नाउ कम्स इज हाउ वी वुड फाइंड द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन. सो वी स्टार्ट evaluating the alternatives, and then we start evaluating if we apply it now what will happen, if we don't apply it now but a little later what will happen, and if we don't apply it what will happen. So we start evaluating the options and their impact with respect to the time applicability. So हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या बेनिफिट है और लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट है. वी डू लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द आइडियाज ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स दैट मे सॉल्व द प्रॉब्लम. And when an alternative is evaluated, so we see what is exactly it is going to be and how exactly it is going to address to the target standard problem. We are not biased when we are evaluating the alternatives, because if we get biased, obviously we may lose a relatively better option which may address to the bigger problem, and this is something which we cannot afford to do. So when we are exploring, we have to be very explicitly clear about all the possible options, alternative that we may have, and then when we come up with a possible alternative or a solution, we go and plan it how we are going to implement, and then we implement a pilot part of it so as to see how exactly it works, what is the impact, and if we go and apply it on a bigger scale, how exactly it would happen. Just for an example, right now in the midst of corona crisis, good number of labs have been doing all experiment to find a vaccine, to create a vaccine, to find a solution to the problem, and they are testing it in one or the other ways so as to make sure that whether if it really works, then it would be implemented on a larger basis. But before applying it on a larger basis, they have to test it on a pilot basis. So when I talk about the ways to solve the problem, one of the very effective way that we go ahead is called as PDCA, that is called as Plan, Do, Check, Act. So what we do in the Plan, Do, Check, Act is we plan. So identify and work on the problem. So हम ढूंढते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है और उस पर हम काम करना शुरू करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसके कॉजेस एक्सप्लोर करते हैं. देन इज द डू पार्ट. सो वी डेवलप आवर पोटेंशियल सॉल्यूशन. Then is the check. So when we do it, we go and check how effective and efficient is the solution, whether it can be improved, whether it should be done, whether it needs to be audited or what. And then is the act wherein we implement the final solution. So when we implement it, what exactly happens is this process ensures to identify, develop, test, and implement one of the best ways to solve a problem. Another way to solve a problem is called as the 5D approach. The 5D approach is called as, in the other way, it is also called as the appreciation inquiry method of solving a problem. So sometimes instead of criticizing, what we do is we appreciate what exactly is going right. So here in the 5D approach, what we do is first D stands for the defining problem, as we have talked a little before. So we define the problem. Then the second part is called as the discovery phase. Third is called as the dream phase. Fourth is called as the design phase, and the fifth is called as the deliver phase. So in the define problem, हम क्या करते हैं? We start looking at the problem and then we start making a problem statement. Then in the discovery phase, what we do is we need to look for what has happened in the past and what is currently working well. तो हम देखते हैं कि क्या हमने किया था पास्ट में, उनमें से क्या चीजें हैं जो अभी सही कर रही हैं, और हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या चीजें सही नहीं कर रही हैं. Then we do is dream phase. So dream phase is like what might be. So
we start exploring the positives to identify through the brainstorming and creative and innovative ideas, so that if we could have accomplished it, where exactly we could have been. Then, in the design phase, we look at the practicalities needed to support the vision, start focusing on the process and the strategies. And in the deliver phase, we start looking at the implementation phase, requires a lot of planning and preparation, ensuring dream is the focus point and it should be supported with a sustainable solution. यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा एक्सप्लोर करते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, so let's say when we are faced with a kind of a challenge or problem, so what we do is we go and take a step back and look at it from the standpoint of what exactly is going good and what is working very fine. So when we start checking at the positive perspectives about the situation and the solutions, which we may have or which may not have discovered previously. So we start exploring new things. Now, this process, when we go and use it, what actually happens is the organization start looking at itself in a unique and positive ways. So problem तो solve हो रही है, but relatively better and unique and positive ways में हो रही है. One of the very effective way is called as Pareto principle. Pareto principle आप सारे लोग शायद जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे तो आपने सुना होगा कि यस 80% ऑफ द contribution in our success comes from the 20% of the areas that we work at. So ये 20% ऑफ द एरियाज जहाँ पे हम काम करते हैं हमारे 80% एफर्ट लेते हैं और हमारे लाइफ की सक्सेस 80% इन 20% वर्क एरियाज पे डिफाइन होती है या डिपेंड करती है. सिमिलरली इसी को अगर हम रिवर्स मोड में चेक करें तो जब भी कभी कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें ये ध्यान देना जरूरी होता है कि कौन से वो 20% एरियाज हैं जिनसे हमारा 80% आउटपुट आ रहा है और हम पहले उनमें जाकर के चेक करते हैं कि क्या वहां प्रॉब्लम तो नहीं है. Is there a problem in those 20% areas or in the rest 80% areas? Because exploring in the 20% areas is much more easy, much more tangible, and much more easily possible. So when we do, what exactly happens is like we start to reduce or eliminate the useless activities, errors, defects that can significantly improve the productivity and prevent problems. So the 80% 80-20 rule helps us on focus on those activities that brings the higher return and also cause the maximum errors. So when we implement the strategy based on the 80-20 rule, that can lead to more productivity and maximum profit, greater time value that we can earn, and the overall improvement in the work that we do. यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है जब भी हम इस तरीके से बात करते हैं तो हम हमेशा एक्सप्लोर करते हैं कि प्रॉब्लम जो आ रही थी वो कहाँ कहाँ से आ रही है. सो वी स्टार्ट नोटिंग डाउन द प्रॉब्लम्स एंड देन वी स्टार्ट लिस्टिंग डाउन द प्रॉब्लम्स इनटू द कैटेगरीज. Then we start to explore that which particular category is contributing how many times to the overall problem, and if we address that particular aspect of it, how much we can resolve the problem, to what a certain percentage we can resolve the problem. So this is what exactly we do through the Pareto analysis. Then one of a very highly, I would say, and effective way of solving a problem is five whys technique. Five why technique is very useful way, and it doesn't require a lot of effort. It requires a lot of thinking at that time, more of a structured approach. So whenever someone is stuck, so what they do is they start asking, they start the problem statement with a why it occurred. So when there is a solution comes in, they start going it further, they start exploring why that exactly happens. So they continue to the five why thing till the time they actually get to the problem. So let's say, for an example, let's say if we explore that in sales, what actually happens? People who are in sales, they always go ahead and try to get as many as people on board as their customers, as their client. Now, let's say a lot many times my client may not be exactly happy. If we go and check on the basis of five whys, five why doesn't necessarily mean that you have to ask question five times only. Sometimes your solution may come into the 2 or 3 level only, or sometimes you may have to go to the 7 or 8 step. But generally, in the five why step process, we get the solutions within the 5 steps generally. So, what we do is we explore that.
what could be the possible ways that my customer is not happy. So we start exploring that because the treatment that we gave to the customer was not happy. We start drilling it further and we explore why we didn't give the experience which was expected by the customer and which we exactly planned to deliver it to customer. When we explore it further, we figure it out because the customer was demanding so many things and we were not able to fulfill it. Now, when we go a little further, when customer was demanding so many things, so why exactly it was he or she was demanding so many things? When we explore, so there could be few things. We may not have explicitly made it clear that what all we can address, what all we can offer. Sometimes we overcome it. Sometimes we say things which we cannot deliver, which we cannot do. And then this ball keeps on coming back to us. So when we start exploring, we have come down to different aspects. So what exactly happens? Because we wanted that client to be in our kitty, we have made promises which we may not be able to deliver. And sometimes we are able to deliver, but because we are not focusing so much, we're relatively casual, that's why we are not able to deliver it. So let's say exploring it further, what we analyze is this particular client has booked a consignment through us, and basis on the certain process we know that this particular goods would be transshipped to its client probably in, let's say, 4 days of time, but this client demands or asks us that this particular set of shipment should be delivered in 3 days time. What we did at that time, did we make him clear, sir, this though I'll try my best, but there are very highly likely chances that it may not be able to get delivered in 3 days time because of the certain process that we have, and we also have to abide by the process, because if we go and do something just for one client, it may create disturbance in the whole process. So it may not be possible, but within my limited constraints and my capabilities, I would certainly see what all best I can go and do that. But making a fake or false commitment at that time is certainly gonna create lots and lots of issues. So we need to see what exactly we can do and how exactly we need to do. So that is what exactly one has to understand, that what exactly needs to be addressed that particular moment. Otherwise, this is going to be a big problem for most of us in the long run. So when we go and talk about it, so what we do is like we understand that yes, when we go and drill it further, we explore the solutions of the problem that we may have. Similarly, in the operations, we can explore the solutions of a problem. Let's say if we find that there is a product which is a customer is complaining for a damaged delivery or probably not a excess or parts supply kind of situation is there. So if we go and further and explore why exactly the product or the goods were delivered in a damaged condition, so we may explore that it may have happened with the delivery boy or it may have been a bit before. So when we drill, we analyze whether it was with the delivery boy or before. We explore it further and then we analyze it could have happened at the hub or probably in the truck. If it was in the truck, so whether it was done as a damage when it was loaded or when it was unloaded when it came to the hub, first hub. So we start exploring, and sometimes we explore and figure it out that the people who are booking the consignments, they are not very much sincere and they are not very much conscious about how to pick and stack the material. They do not know what exactly should be taken care of at that particular moment of time, and this is how exactly we explore the different ways of solving a problem. So I can see as of now a lot many things have come up. Okay, this is a very huge and I would say vast topic. There are so many ways to solve a problem. I have explored and discussed about few of the options how to solve a problem. So let me go and see what all questions people have asked, and let me see how exactly I can answer to them. And I really appreciate everyone who has attended this program. It was good to have you, and I wish you a great day further. So I can see. Okay, someone has asked what's the future in the
logistics and supply chain, well, I would really appreciate go and register yourself with the Save job, and you'll get to know a lot more. But with my limited capacity, I would say logistics is one of the very booming industry at the moment, and I really feel proud to be associated with Safe Express, which is the India's not only the largest but one of the most reputed brand. And especially when it comes to logistics and supply chain, it is undoubtedly one of the most trusted brand, and that's why exactly it is the biggest and the largest. Clients keep on coming back to us because we deliver it extremely well, we book it well, we do all the processes, we do adhere to everything to utmost sincerity and in our best approach. And that's why exactly I would say, not only because I am associated, you can see there was a time when it was a dot-com bubble. There was a time when there was different kind of scenarios or businesses boom have been. This is a time when there is a high boom for the logistics and supply, because you cannot live without with the products and all that. So if there is a product, it has to be manufactured and it has to be delivered to you. And when it exactly it comes to delivery, there is the role of the logistics and supply chain. So certainly it is a good option. So I would really wish you best. Please go ahead and make a move. And I would really appreciate if you can case drop your questions. I would be happy to solve to give us solutions to them. Thank you so much for attending this webinar. This was Ankit Tiwari. Thank you so much once again. Have a wonderful day. Stay fit, stay healthy, and stay safe. Thank you so much. Bye.